दोस्तों नमस्कार। आज के इस संस्करण में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 24 अप्रैल 2023 को एक ऐसे जजमेंट के 50 साल पूरे हो गए हैं जिसकी गोल्डन जुबली थी, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती का केस है जो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस केस को 13 जजेस लोगों ने सुना था। वो जजेस के नाम थे चीफ जस्टिस एस.एन. सेकरी, ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस डी.जी. पालेकर, जस्टिस एच.आर. खन्ना, जस्टिस जे.एम. सेलट, जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस के.एस. हेगड़े, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस पी. जगमोहन रेड्डी, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस ए.एन. रे एंड जस्टिस एस.एन. मुखर्जी। 13 जजेस की बेंच ने इस जजमेंट को दिया और ये 7-6 की मेजॉरिटी से पास हुआ। मतलब 7 जजेस ने जो प्रपोन किया, जो थ्योरी प्रपोन की बेसिक स्ट्रक्चर की, उसके फेवर में जजमेंट दिया और 6 लोगों ने इसके उलट जजमेंट दिया। उसमें जो फेवर में देने वाले हैं उनके नाम हैं जस्टिस सीकरी, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस खन्ना, जस्टिस सेलट, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस रेड्डी एंड जस्टिस मुखर्जी। अब रेस्ट ऑफ द जजेस, इनके नाम हैं जस्टिस डी.जी. पालेकर, जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी और जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ और ए.एन. रे ने इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। ये केस 68 हियरिंग में पूरा हुआ। इसके लिए 68 हियरिंग हुई और ये 68 हियरिंग के बाद पूरा हुआ। पहली सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुई थी और आखिरी सुनवाई 23/3/1973 को हुई। तो करीब 5 महीने इस केस में सुनवाई में लगे। 24 अप्रैल 1973 को, यानी कि लास्ट सुनवाई होने के 1 महीने बाद इस केस का फैसला आया और ये फैसला, ये जजमेंट 700 पेजेस का था। अब इस केस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कहानी है, वो क्या है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करके समझा देता हूं। ये बोल रहे हैं, इन February 1970, Swami Keshvanand Bharti, senior plaintiff and head of the Hindu monastery Ednare Matha in Ednare, Kasaragod district, Kerala, challenged the Kerala government attempt under 2 Land Forms Act to impose restriction on the management of a noted Indian jurist Anubhai Palkiwala convinced Swami into filing his petition under Article 226 concerning the right to manage religiously owned property without government interference. The hearing consumed 5 months and the outcome profoundly affected India's democratic processes. The case had been heard for 68 days, the argument commencing on October so and so, जो मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को सुना और उसकी वैलिडिटी देखी, जिसमें आर्टिकल 24, 25, 26 एंड 29 के जो अमेंडमेंट हुए थे उनके बारे में देखा। The case was heard by the largest ever constitutional bench of 13. The bench gave 11 separate judgments which agreed in some points and differed in others.
Nanubhai Palkiwala, assisted by Pauline Nariman and Solicitor Abjit, presented the case against the government in both cases. Majority क्या बोल रहा है? Upholding the validity of clause 1 of Article 13 and corresponding provision in Article 368(3 inserted by the 24th Amendment, the court settled in favor of the view that Parliament had the power to amend the fundamental right. However, the court affirmed another proposition also asserted in Golanda case by ruling the expression amendment of the Constitution in Article 368 means any addition or change in the provision of any provision of the Constitution within the broad contour of preamble and the Constitution to carry out the objective of the preamble and the directive principle applied to fundamental right. It would be that while fundamental right cannot be abrogated, reasonable abridgment of fundamental right could be affected in public interest. The true position is that every provision of Constitution can be amended provided the basic foundation provided. ये बहुत important है. Remains same. ये लोग हैं. ये सब की बात कर रहे हैं. अभी क्या बोल रहे हैं? The government of India did not take kindly this restriction on its power by the court on 26th April 2017. Justice Ajit Natre, who was among the dissent, was promoted to Chief Justice of India, superseding 3 senior judges, Siddharth Grover, which was unprecedented in. मतलब मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ कि 24 अप्रैल को जजमेंट आया और 26 अप्रैल को इंदिरा जी ने अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया. किसको किसको सुपरसीड किया उन्होंने? सेलेक्ट को किया, ग्रोवर को किया, and हेगड़े को, which was unprecedented. The 42nd Amendment enacted in this is considered to be the immediate and most direct fallout of judgment. Apart from its judgment cleared the check for complete legislative authority to amend any part of Constitution except when the amendment were not in consonance with this. तो ये हुआ. अब इसमें आप देखेंगे कि क्या किया था इन्होंने. बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. इसको मैं हटा देता हूं और बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं कि इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था. All of the judges held that 25th, 24th, 25th, 29th Amendment are valid. 10 judges held that Golaknath case was wrongly decided and the amendment of the Constitution was not a law for the purpose of Article 13. 7 judges held that the power of amendment is plenary and can be used to amend all the articles of Constitution. 7 judges held, dissenting on the part that the power to amend does not include the power to alter the basic structure of Constitution so as to change its adjective. 7 judges held, 2 judges dissenting, 1 leaving this open, that there are no inherent implied infirmities on the power of the amendment of the Article 368. 9 judges, including 2 dissenting, signed a statement of summary of the judgment that read, Golaknath case is overruled. Article 368 does not enable Parliament to alter the basic structure or framework of the Constitution. The Constitution 24th Amendment is valid. Section 2A, 2B of the Constitution is valid. The first part of the section of Constitution is valid. The second part, namely, and no law containing a declaration that is for giving effect to such policy shall be called the question. And any court on the ground it does not give effect to such policy is invalid. The Constitution 9th Amendment is valid. The ruling thus established the principle that basic structure cannot be amended on the ground that a power to amend is not a power to destroy. The majority had differing points on what basic structure of the Constitution comprised. Chief Justice
S.M. Sikri, writing for the majority, indicated the basic should consist of the following: the supremacy of the Constitution, Republican and democratic system, the secular character of the Constitution, maintenance of the separation of power, federal character of the Constitution. Justice Sellett and Gurwat, in their opinion, rated 3 features to the Chief Justice. This mandate to build a welfare state contained in the narrative principle of state maintenance of the unity and dignity of India's sovereignty of the majority. Judges Hegde and Mukherjee, in their opinion, provided a separate and shorter list: sovereignty of India, democratic character of the polity, the unity of the country, essential feature of individual freedom. The mandate to build a welfare state. Justice Jagmohan Reddy preferred to look at the preamble, stating that basic structure of the Constitution were laid out by that part of the document and thus could be represented by a sovereign democratic republic, provision of social, economic and political justice, liberty of thought expression and this. इसके बाद फिर हिंदुस्तान में गड़बड़ शुरू हुई, which ultimately resulted into 1993 कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर थी तो कुछ भी कर सकते थे। ये देखिए, ये देखो, Ray, who was among the dissenting in the Keshvanand Bharti case, had been promoted as Chief Justice of India, superseding 3 senior judges, all in the majority of the case, which was expressed in Indian history. On the November 10 and 11, the team of civil libertarian based barrister led by this argued against the Union government application for recommendation of judgment. Some of the judges accepted judgment on the very days. तो ये था आपको बताना। तो हम लोग आज केशवानंद भारती की वजह से ही बचे हुए हैं, जिसमें कि कोई भी गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। We should thank the judges who have given the judgment, though they face the consequences by not being promoted by the dictatorial इंदिरा जी। Anyway, तो ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लैंडमार्क, बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। कभी भी कोई भी लॉ का स्टूडेंट होगा, अगर इस जजमेंट को पढ़ेगा तो ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसको आपको बताना था डेट वाइज। ऐसे ही कभी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट घटना होगी जो किसी केस से रिलेटेड होगी, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।